Very good morning, students. How are you all? I hope that all students are safe and well at their home. Stay home, stay safe. Okay. If we discuss about our study parts, then you know that in physics portion, I have started chapter number 9, and in our previous class, I have covered all the summary points for you. We have discussed that what we will go through with this chapter, particular 9, chapter number 9, force and laws of motion. First law, second law, third law of motion, conservation of momentum, how you can define the term momentum. वो सारी चीज़ें हमें इसमें अब वन बाय वन डिस्कस करनी है. So let's see chapter number 9, force and laws of motion. Okay. You know that in our previous chapter, we have discussed about the motion. If I just want to ask that what is it, how you can define the term motion, you can also tell me that if the position of an object changes with respect to time, then the body is in motion, otherwise the body is at rest. Clear? But you always observe in your daily life also that if you want to move a stationary object, or if you want to change its direction, or you want to change in its magnitude of the speed, we required some external factors. We require some external factor, and that external force, that external factor is called force. That external factor is called force. Am I clear? तो बच्चों इसमें हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, या डायरेक्शन को चेंज करना है, या स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, देन वी रिक्वायर्ड अ क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड फोर्स. दैट इज कॉल्ड फोर्स. क्लियर? फोर्स को लेकर कई चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. इसकी यूनिट क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, वो सारी बातचीत हमें यहाँ पर इसकी करनी है. लेकिन हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, इफ़ यू वांट टू चेंज द स्टेट of an any object, then you required a term that is called force. फोर्स हमें लगाना पड़ेगा. फोर्स सिंपल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है. फोर्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली पुश और पुल. ओके बच्चों, यदि फोर्स की बात करते हैं, you can see in this paragraph, for many centuries the problem of motion and its causes had puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. Okay? मतलब आपने किसी भी कोई एक बॉल लिया, बॉल के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए चलता रहेगा. It will move for a certain time interval. It means the natural tendency of an object is state of rest. कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे. इट मीन्स धीरे धीरे हम फिर बाद में लॉज ऑफ मोशन की बात करना शुरू करेंगे. इज दैट क्लियर? ओके. You know that in our daily life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Clear? That is what that external factor is called force. और फोर्स की मैंने आपको एक स्मॉल डेफिनेशन, जो कि आप लोग सब बच्चे जानते भी हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली पुश और पुल. फोर्स को यदि हमें सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. क्लियर? अब हम बच्चों ये देखना चाहें, हमने ये बात कर ली कि फोर्स क्या है, व्हाई इट इज एसेंशियल. नाउ हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट what changes
will be there if we apply some external force on an object. The very first is, you can see in this paragraph from our studies in earlier classes, we can also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब क्या है बच्चों? ये यदि रेस्ट पर है तो उसको चला सकता है, यदि कम वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को कम कर सकता है, और the force can also change the direction of the motion. On the other hand, force can also change the size and shape of the object. Size and shape of the object. Here in these pictures you can see it easily. और बच्चों देखिए ये एक स्प्रिंग का डायग्राम है बच्चों, आपने दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स लगाया, the length of the spring will increase. The length of the spring will increase. You can say that its size or size will change after applying the force. Here you can see in this diagram the shape of a rubber ball will change when we apply some external force. Here also you can see the effects of the forces. तो यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फोर्स क्या है. Simply you can say that force is push or pull. And what are the effects of forces? Number one, effect of force में हम क्या कहेंगे? It can move a stationary object. It can, number two, it can change the speed of a moving object. Number three, it can change the direction also. Number four, it can change size as well as shape also. So these are the effects of the forces. Clear? Now move ahead. बच्चों पहला टॉपिक जिसकी हमें बातचीत करनी है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक भी है, आप लोग सब जानते भी हैं. देखते हैं इसको. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने क्या किया बच्चों, एक वुडन टेबल पर एक ब्लॉक हमने रख दिया और इस ब्लॉक के दोनों तरफ हमने दो स्ट्रिंग्स बांधी है. लेट दीज आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली. हमने वुडन ब्लॉक पर दोनों साइड में दो थ्रेड्स हमने बांधी, स्ट्रिंग्स हमने बांधी है. दीज आर एक्स एंड वाई. Suppose if we are only applying the force on x, if we are only applying the force on the string x, then what happens? This block starts to move in right side. Okay. On the other hand, if we apply only the force on a y string, then what happens? This block starts to move. This block starts to move towards the left side. Okay. Now what we are doing, we are applying the same force. We are applying the equal force on both the direction, in both the direction, that is along x also, along y also, and the amount of force is also equal. Now the block will not move. Now the block will not move. What is this case? Again please listen. You are applying the same force on x and y. This block will not move. And you can say this do not change the state of rest or motion. Clear? In this case, you can say that the forces act on this block are balanced forces. What type of force these two forces are called? These are called balanced forces. तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगा, फोर्स हम लगा रहे हैं
but both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. So the block will be stationary. तो आपको यदि इस ब्लॉक को चलाना है, इसको मूव कराना है, तो हमें इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा. Unbalanced force. You can see here, if suppose along x we are applying a greater force and along y we are applying a weaker force. आपने x की तरफ ज़्यादा फोर्स लगाया, y की तरफ हमने कम फोर्स लगाया, then the block starts to move towards the right side. Okay? तो बच्चों इससे हमें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि suppose if you want, if the two forces are not balanced, then only the object will be in motion. यदि मैं इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के आपको बताना चाहूँ बच्चों, आपने जैसे इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन, तो बैलेंस्ड फोर्स नेट फोर्स 0. हाँ, आपने यदि x के अलोंग 5 न्यूटन एंड y के अलोंग 3 न्यूटन यहाँ पर लगाया, then this block will start to move with a force of 2 Newton along x. तो आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हमें यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है या उसकी पोजीशन में चेंज करना है, then unbalanced force is required. Unbalanced force is required. बच्चों आप सभी लोग साइकिल आपने चलाई होगी, ये चलाते हैं आप लोग साइकिल्स. आप देखते हैं क्या होता है, if we stop pedaling the bicycle begins to slow down. आपने साइकिल जब चला रहे हैं, बाइसिकल आप चला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, यदि हम पेडलिंग स्टॉप कर दें, then the bicycle begins to slow down. Why this happens? This is because of the friction force acting opposite to the direction of motion. अब बात होती है बच्चों कि फ्रिक्शन क्या होता है. जब भी बच्चों आपने किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा और आप उसको मूव कराते हैं, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी बच्चों एक फोर्स लगता है जो कि उस एक्सटर्नल फोर्स का जो हम लगा रहे हैं उस फोर्स का अपोज करता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स. दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स. आप इस स्लाइड में इसको देख सकते हैं. देखिए, हियर two person they are exerting a force on a heavy wooden block. This represents the direction of the friction force. अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, देखिए बहुत हैवियर कोई ब्लॉक है, आप उसके ऊपर आपने स्मॉलर फोर्स लगाया, सपोज इट नॉट स्टार्ट्स टू मूव. मैं आपसे कहूँ कि आप वॉल के ऊपर फोर्स लगाओ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा. आप यदि सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाओगे, इट विल नॉट मूव. आप यदि किसी वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, वॉल विल नॉट मूव. You will move in opposite direction. So here I just want to explain you the term friction force. बच्चों फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. फ्रिक्शन फोर्स always acting in the opposite to the direction of the motion. बात समझ में आ रही है बच्चों आपको ये? तो इस डायग्राम में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज इफ यू आर हैविंग अ हैवियर वुडन ब्लॉक और आपने इसके ऊपर कुछ स्मॉल फोर्स आपने लगाया, देन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दिस ब्लॉक विल नॉट मूव. नाउ सपोज इफ यू इंक्रीज द फोर्स, आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया लेकिन अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, that is again there is a friction force. तो बच्चों ये ब्लॉक कब मूव करेगा? जब आप इस फ्रिक्शन फोर्स से
ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। अभी तक तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स है, आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, बैलेंस्ड फोर्स। एंड यू नो that in case of balanced force the object will not move. For the change in its position you required unbalanced force. और बच्चों ये अनबैलेंस्ड कब होगा? जब आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएं? फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा। जब आप फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं then only this wooden block will starts to move. So let's see this paragraph. Thus you can say, to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required and the change in its speed or the direction also unbalanced force is required. However, this force is removed completely. The object would continue to move with the velocity it has acquired till then. तो बच्चों यहाँ तक मैंने क्या आपको पढ़ाया, बस मैं एक बार आपको और रिकॉल कराना चाहता हूँ। नंबर वन, फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज पुश और पुल। नंबर वन, what are the effects of forces? Listen carefully. Force can move a stationary object. Force can change the direction of a moving object. Force can change the magnitude of the velocity of a moving object. And force can change shape and size of the object. Clear? After that, we have discussed balanced and unbalanced forces. Balanced force means if two forces are acting equal and in opposite direction, the net force is zero. In this case, these two forces are called balanced forces. And in balanced force, object will not change its position. And in case of unbalanced force, body can change its position and can start to move or stop. So to accelerate motion, or you can say that for a change of state we require the unbalanced forces. तो यहाँ तक सबको मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैं आपको अभी सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ बताना चाहूँगा। यू कैन से that a body will be either in a state of rest or will be in a state of motion until unless we are not applying the external force. उसको बच्चों हम inertia को भी एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, ठीक है, और सारी बातचीत उसमें हम आगे करेंगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई है? तो यहाँ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ बच्चों। ओके।